Hello to all class 12 and class. I believe that you people are doing good and you must be having good July assessment tests. So we were in lesson number 9. We are in lesson number 9 for the market, and we are doing the features of monopolistic competition. If you remember, we have completed already 2 features, and these are large number of buyers and sellers and differentiated products. Right? Today we are going to start with the third feature. And the third feature is free entry and free exit. Right? Now free entry of what and free exit of what, from where? Free entry is of the firms from the market and exit of old firms from the market. Now when do a firm decides to enter a market? A firm decides to enter a market when they see that there are good profit chances are there, when there are higher profit chances there, when the industry is earning very high profits, or you can say abnormal profits, when the market is earning abnormal profits, then in this case the new firms, they like to enter the market, right? So I told you this also, that many firms when join, they make a industry, right? They make a industry. So free entry and exit means new firms can enter the market, F for firms, and old firms can exit the market. Okay? Old firms are exiting from the market and new firms are entering the market. When this happens? New firms enter when there are higher profits, abnormal profits. Abnormal profit. In the conditions of abnormal profit, the new firms, they enter the market because they think that they can also earn good profits out there. That's why they enter. So in the condition of abnormal profit, new firms enter the market. And when do old firms leave the market? Old firms leave the market in the condition of losses. When there are losses, the old firms leave the market. They are leaving the market. Now what happens in such condition? Always remember, in such condition, firms earn only normal profit in long run. So the result of this feature, free entry and exit of the market, मिटा देती हूँ नीचे वाले को. In this feature, the implication is this, that firm earn normal profits. Now I'll explain this to you, why this happens. Let's see. So यहाँ पे what is happening, that when there are higher profits, when there are abnormal profits, new firms are entering the industry, right? Then there are higher profits, abnormal profits. What is happening? New firms are entering. So what is happening? The supply is being increased by these firms. ये firms आकर के अंदर supply increase कर देती हैं, ठीक है? और ये जो profit, abnormal profit हो जाता है, ये किस पे convert हो जाता है? Converts into normal profit, क्योंकि अब बेचने वाले पहले से ज़्यादा है. तो ऐसा होने से क्या होता है? Convert into normal profits. क्योंकि पहले कम सेलर्स थे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स थे. जब ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट देकर के नए सेलर्स भी मार्केट में आ गए तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? ज़्यादा लोगों पे एबनॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा लोगों पे डिवाइड हो गया और आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट पे. सेम वे अगर क्या हो रहे हैं, आपका लॉसेस हो रहे हैं फर्म में और फर्म्स बाहर निकलना शुरू करेंगी, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेलर्स डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? आपका लॉसेस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नॉर्मल प्रॉफिट में. ठीक है? तो किसी भी कंडीशन में, चाहे द न्यू फर्म्स आर एंटरिंग और the old firms, the existing firms are leaving the market, in both the conditions what will happen? The firm will earn only normal profit in long run. This is what happens. Okay, so if I tell you what is free entry and exit, so you would say free entry and exit means that the new firms are free to enter the market whenever they want, and the old firms
or existing firms are free to leave the market whenever they want. So this leads, how it leads I told you, this leads the firm to earn only normal profits in long run. Okay, now the next feature is selling cost. Selling cost. Fourth is selling cost. Okay, now what is selling cost? Selling cost is the expenses incurred by the firm on sale promotion measures, like advertising, right, door to door selling, etc. Now whatever expenses are incurred by the firm on sale promotion measures, any measure through which a firm can increase its sales are known as sale promotion measures, like advertising, door to door selling, or some schemes. Alright, or some schemes are there, lottery, something. So it could be anything, free gifts, it could be free gifts also. So many times what happens, many times sellers, they offer free gift so that people will purchase their product in and they increase, and this way they increase the sale, the firm increase their sales. So all the ways through which their sales can be increased is known as selling cost. And but the main point is this. At times they ask you simply in question 2 marks question that what do you mean by the term selling cost? So you can write down that what is selling cost. Right? At times they ask you to explain selling cost, the feature, explain it as a feature. So in this case, what is going to happen? You're going to explain it. So further, what you can write here, that selling cost, this feature arises due to the fact that differentiated products are produced here. Okay? So due to feature of differentiated product due to the feature differentiated product, the feature of selling cost arises. Here in monopolistic competition, यहाँ पे ज़्यादातर फर्म्स अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही होती है. प्रोडक्ट एक रहेगा, उसके टाइप्स अलग अलग होंगे, इनमें कोई ना कोई फीचर अलग होगा. जैसे कि टूथपेस्ट का अगर हम मार्केट लेते हैं तो टूथपेस्ट की इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत सारे फर्म्स हैं जो टूथपेस्ट बना रही है. हर फर्म का टूथपेस्ट दूसरे के टूथपेस्ट से किसी ना किसी तरीके से अलग है, डिफ्रेंशिएटेड है. ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, इन लोगों के पास एक एज मिल जाती है, कोई एक मार्जिन मिल जाता है कि दे कैन गो फॉर एडवर्टाइजिंग एंड इंक्रीज देयर सेल्स. ठीक है, थ्रू देयर सेलिंग कॉस्ट. सो जैसे हम टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका हो सकता है टूथपेस्ट सभी एक जैसे होंगे, लेकिन किसी में मिंट फ्लेवर होगा, किसी में क्लोव होगी, किसी में सॉल्ट होगा, कोई हर्बल होगा. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होगी. तो क्या होता है, हर एक का टूथपेस्ट है वो सभी टूथपेस्ट, लेकिन फीचर कुछ ना कुछ उसमें अलग है. तो सबके पास क्या हो जाती है, गुंजाइश हो जाती है, एज हो जाती है कि वो सेलिंग कॉस्ट इनकर करके क्या कर सके, अपना सेल को बढ़ा सके. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है और सेलिंग कॉस्ट एक तरीका यहाँ पे सेल बढ़ाने का. फिफ्थ फीचर इज योर नॉन प्राइस कंपटीशन. But also on the basis of non-price competition. So this is another one. In this type of market, price को लेके कोई competition नहीं है. अगर आप यहाँ पे की बात करो, सेलिंग कॉस्ट के बारे में बात करो, एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करो, तो एडवर्टाइजिंग क्या है, एक नॉन प्राइस कंपटीशन है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस को लेके कोई कंपटीशन नहीं है. कोई भी फर्म अपने प्राइस को बढ़ाती है, घटाती है, बढ़ाए या घटाए, ऐसा इसको लेके कोई कंपटीशन नहीं होता है. ठीक है, नाउ इस तरह की फर्म में क्या होता है, जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होंगे, लाइक फॉर एडवर्टाइजिंग ओनली. एडवर्टाइजिंग, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. सो इफ यू जस्ट रीड, non price competition is an essential feature of monopolistic competition.
Firm under monopolistic competition compete in the manner where there is no competition on the basis of prices. Okay? That is producing here. What happens? You produce differentiated product. Differentiated products are produced. Differentiated products बनाए जाते हैं and advertising is done. एडवर्टाइजिंग की जाती है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं सेलिंग कॉस्ट इनकर किए जाते हैं, सेलिंग कॉस्ट इनकर किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस को लेकर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। प्राइस अगर कोई कम कर रहा है तो करे, कोई बढ़ा रहा है तो बढ़ाए, लेकिन प्राइस को लेकर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, राइट। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अ next, and this is also going to be the last one. So in this type of market everyone has independent price policy. ठीक है, कोई एक फर्म दूसरी फर्म को देख करके अपने प्राइस को चेंज नहीं करती है, उनकी अपनी प्राइस पॉलिसी होती है। वो प्राइस को बढ़ाते हैं तो कोई रीजन से बढ़ाते हैं, घटाते हैं तो किसी रीजन से घटाते हैं। So a firm under monopolistic competition can follow an independent price policy. It can make its own price and output decision. Firms can make their own price and output पॉलिसी। यहाँ पे खुद की वो पॉलिसीज बनाते हैं, चाहे वो आउटपुट को लेके हो, चाहे वो प्राइस को लेकर के हो। इट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे क्या है, लिटिल प्राइस कंट्रोल होता है किसके पास, फर्म्स के पास। अब प्राइस कंट्रोल क्यों है लिटिल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड है, प्रोडक्ट अलग अलग है, लोगों के एक प्रोडक्ट होके भी उनके फीचर अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्राइस पे थोड़ा बहुत क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, नाउ इसलिए क्या बच जाते हैं, इट मीन्स द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज प्राइस मेकर। दस फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सेट देयर प्राइसेस बट द मार्केट डिमांड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्राइस मेकर्स है ये लोग, क्या है, पार्शियल प्राइस makers. They ask you price makers price control क्या है, कितना है, यहाँ पे तो आप कह सकते हो absolute price control भी नहीं है, zero price control भी नहीं है, बहुत हल्का सा partial price control है, थोड़ा बहुत price control है, क्योंकि products क्या है, differentiated है। ठीक है, so from the analysis of characteristics we have done all the characteristics altogether, there were 6 characteristics and 6 characteristics को explain किया है। And I hope you have understood this. And हर characteristic का अपना एक implication है। Whenever you write the characteristics, आप simply अगर कोई characteristic लिखो, large number of buyers and sellers, और फिर उसके अंदर ये लिख देते हो कि in this kind of market there are large number of buyers and large number of sellers. Finish. It is not like this. So whenever you are explaining characteristics, class 12 in this chapter, whenever you are explaining the characteristics, you need to write down the implications, right? If you are writing large number of buyers and sellers, then you need to explain that what happens if large number of buyers and sellers are there. So if large number of buyers and sellers are there, then they are not going to have any control over the price of the product. क्योंकि large number of buyers and sellers अगर होंगे तो वो उनका मार्केट में बहुत छोटा हिस्सा होगा, तो उनके बेचने ना बेचने, खरीदने ना खरीदने से मार्केट के पैसों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेम में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, अगर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो यू कैन नॉट राइट कि all the new firms are ready to they can enter the market whenever they want and old firms can leave the market whenever they want. So this is not the answer. आप proper लिखोगे इसको, new firms can enter the market whenever they want and old firms can leave the market whenever they want. And because of this reason, what happens actually, all the firms in long run earn normal profit only, because new firms enter when there are abnormal profits, and when they enter the market and start supplying the product, the abnormal profit gets divided into more people, more firms from than before, and it turns into normal profit. Same way,
If old firms are leaving the firm, then what happens? They are leaving because there are losses. So as soon as they start leaving, the number of firms reduce, so supply also reduce, and the losses convert into normal profit. So these are implications. So whenever you're explaining features, you need to put implications also, because if you don't write implication, you don't get marks for your answers. Always remember this thing. Always remember this thing, that writing implication is very, very important. So after this features, we have done 6 features altogether. How many features we have done? 6 features of monopolistic competition, and they were monopolistic competition. They were large number of buyers and sellers, right? Second one was differentiated product. Free entry and exit, right? Non-price selling cost, non-price competition, and one more is there, and that is independent price policy. Price policy, right? So these are all together measures. In case you have problem in any one of the feature and you do not understand, or you do not understand the application, you can make me a call or you can text me up. Children, this is enough for today, and in the next video we'll be starting with oligopoly market. Till then, keep completing your work, stay home, stay healthy.